watching Explosive Exclusive with me, Kritsween Walia, and I'm currently at Jantar Mantar. It's very important, viewers, that we bring to you these very important voices. These are people who have made our nation proud, not once, on multiple occasions. And today, they're sitting here at Jantar Mantar since this morning, raising their voices against what they've been facing for the longest time. You can see there's Vinesh Phogat, there's Sakshi Malik, top wrestlers of our country are today present here. I'm going to straight away, without wasting any time, go across to them to really put this in perspective and help us understand what is it that they're trying to raise today. Vinesh, हम आपकी बातें सुनते आए हैं, जो आपने सुबह से बोला है, बहुत बड़ा आरोप आपने जो WFI के प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ लगाया है. वो कह रहे हैं कि उनके पास सिक्योरिटी कवर है, वो दूर रहते हैं. अब जाके ये बातें क्यों उठाई जा रही हैं, आप क्या कहेंगी? क्योंकि बहुत बहुत गंभीर आरोप है. देखिए, पहली बात तो सिर्फ मैं ये आरोप नहीं लगा रही हूँ. हम जितने भी हम आपको देख लीजिए, आप कितनी रेसलर्स बैठे हैं, वुमेन रेसलर्स हैं, सभी ने इस चीज पे एग्री किया है. आप इनसे पूछ लीजिए, ये सब इस चीज पे एग्री करते हैं. और मैंने आपको बोला कि जिनके साथ में ये सब हुआ है वो हमारे साथ मौजूद हैं. वो बोल रहे भी बात में कहीं भी झूठ नहीं है. यौन शोषण एक बहुत बड़ा आरोप है. उसके अलावा आपने बोला अब्यूज की बात की, हरासमेंट की बात की. ये सारी चीजें कब से हो रही हैं, कब से चल रहा है, कब से ऐसी कठिनाइयां हमारे देश में एथलीट्स को फेस करनी पड़ रही हैं, स्पेशली अगर हम आपके खेल की बात करें? देखिए, जो हमसे पहले सीनियर्स थे उनके साथ में काफी हुआ है, क्योंकि जब मैं कैडेट में थी तब मैंने सुना था कि ये सब हो रहा है. जब मैं नई नई सीनियर में आई हूँ, जो मेरी बहनें भी स्पोर्ट्स में रही हैं, उनके साथ भी उन्होंने भी सब देखा है, उनसे भी हम सुनते आए हैं. उसके बाद जैसे ही मैं सीनियर में आने लगी, मेरे कुछ मेडल आने लगे, तो तब मेरे साथ में ये सब हुआ है. इतना मेंटली हरास मतलब किया है. 2017 से तो मेरे पीछे ऐसे हाथ धो के पड़े हैं कि इसको छोड़ना ही नहीं है. और अभी जूनियर बच्चों के साथ में अभी हर चीज का हरासमेंट कैसे मतलब सहन करे एथलीट. नहीं, अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है ना, बहुत जरूरी था विनेश कि आप आके बाहर बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है. जो अभी नौजवान आ रहे हैं, जो खेलकूद में भाग लेना शुरू कर रहे हैं, वो अगर ये सुनेंगे और वो अगर यही फिर से देखेंगे तो वो बहुत गलत होगा. पर आप क्या समझ रही हैं कि न्याय होगा? क्योंकि आपने बताया कि आपको कैसे मृत्यु के थ्रेट्स मिले जब आपने ये रेस किया इशू प्रधानमंत्री के साथ. देखिए, अगर हम में आज वो बोल रहे हैं कि इनमें इतने दिनों तक हिम्मत कैसे नहीं आई है. पहली बात तो हिम्मत सब में होती है, लेकिन वो एक इतने पावरफुल इंसान के सामने आपको आना, आपको भी पता है, कोई भी एक नॉर्मल इंसान, हम नॉर्मल फैमिली से आते हैं. आप गांव में चलिए, मेरा घर देखिए, किस घर से हम आए हैं, किस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ. एक गरीब फैमिली से हम आए हैं, इस लेवल पे पहुंचे हैं. उसके बाद हमारे साथ हर दिन हमारा आत्मसम्मान गिरवी रखना पड़ता है उनके सामने. हर छोटी से छोटी चीज के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फेडरेशन में जाना पड़ता है. अब हम इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, नेशनल कंपटीशन के लिए तैयारियां करें कि उनके सामने गिड़गिड़ाएं. नहीं, और जो आप हमें बात बता रही है कि ये बार बार चलता आया है, आपने ये उठाई भी बात, क्या बताया आपने प्रेसिडेंट को पहले, ब्रिजभूषण को, कि ये चल रहा है, हमारे दिमाग में ये चल रहा है, ये कठिनाइयां हैं? देखिए, अगर मैं उनको बता देती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं रेसलिंग नहीं करी होती, शायद मैं भगवान के पास जा चुकी होती या मेरा रेसलिंग का करियर खत्म हो चुका होता. कोई किसी के साथ भी गुनहगार, कोई भी जिसने गुनाह किया है, कोई भी जो पीड़ित है, उससे कोई सामने उसके जाके कहता है कि आपने ये कर दिया, और वो मान लेगा वो उसने कर दिया. सभी उसको डिनाई ही करते हैं, तो डिनाई करने से कुछ नहीं होगा. पर वही बात है ना कि आप तो कह रही हैं कि ये सच है. ब्रिजभूषण जी एकदम से बाहर आए, मीडिया से बात की और कहते हैं कि इसमें कोई सच नहीं है. आज जाके 10 साल बाद क्यों ये बातें उठाई जा रही हैं? और ये जो नए रूल्स इंक्लूड किए हैं, ये उसको लेके जो विरोध है, ये इसलिए सामने आ रहे हैं. रूल्स तो इनके हर दिन चेंज होते हैं जी, हर दूसरे दिन इनके रूल बनते हैं, इनके घर के कमरे में रूल बनते हैं, अपने हिसाब से रूल बनाते हैं. ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो ये रूल बना रहे हैं, जो फेडरेशन बना रही है, क्या उसमें कोई भी ओलंपिक एथलीट इन्वॉल्व है? क्या जो करंट में एथलीट चल रहे होते हैं, क्या उनसे पूछा जाता है कि ये आपके भले के लिए है या आपके बुरे के लिए है? जी, और जहां तक बात की जाए कि जो आपने आज सबके सामने निकल के बात की, आप में क्या ऐसा वो थॉट आया, क्या सोचा आपने कि बहुत हो गया, आज मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, पूरे देश के सामने ये बात रखनी पड़ेगी? आप रोई, सबने देखा, वो पता चल रहा है कि बहुत बड़ी एक कहानी है इसके पीछे. देखिए, रोई तो जब आप ओलंपिक्स में एक गृह मंत्री बनना है, हम तो एक स्पोर्ट्स पर्सन है. मेरा पेरिस का ओलंपिक्स मेरे सामने है, मेरा रेसलिंग का कैरियर अगर मैं छोड़ के इधर बैठी हूँ, ये बच्चे अपना भविष्य छोड़ के बैठे हैं, ये आने वाले ओलंपिक्स में जाने वाले बच्चे हैं. अगर वो छोड़ के इधर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना.
जी आप भी कुछ बोलेंगी? साक्षी मलिक आपसे भी अगर बात करें कर लीजिए प्लीज। और विनेश एक जाने से पहले बात, इसके बाद आप क्या उम्मीद लगाए बैठी हैं? किसके पास जाएंगी? हमने देखा कि पुनिया ने भी गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को टैग किया, ट्वीट डाला, आप सबने ट्वीट डाला, तो इसके बाद क्या करेंगे आप? देखिए, हमें उम्मीद है कि देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमारी बात को जरूर सुन रहे होंगे और वो हमारे पक्ष में है। उन्होंने इतना मान सम्मान बढ़ाया है। जब हम हार के भी आते हैं, जब मैं टोक्यो से भी हार के आई तब भी उन्होंने मेरा इतना हौसला बढ़ाया था। वही आज मेरे को यहाँ पे लेके आए हैं और वही एक हौसला में लेके आया है कि देश के प्रधानमंत्री हम खिलाड़ियों को इतना मान सम्मान अगर दे रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बुरा नहीं कर सकती। इसलिए हमें आज ये हिम्मत आई और इसलिए हम आज ही सामने आए हैं। और आपने कहा कि ये बातें इसलिए अभी तक सामने नहीं की क्योंकि सामने रखते तो आपको पक्का रोका जाता। पक्का रोका क्या जाता? मतलब हम बता रहे हैं कि अगर लाइफ थ्रेट की अगर बात है तो क्या ही पता मेरी फैमिली के साथ क्या होता, मेरे साथ क्या होता, तो बोलने वाले रेसलर के साथ में क्या होता। तो आप अभी सिक्योरिटी को लेके चिंतित नहीं है? बिल्कुल है। मैंने आपको बोला ना मीडिया में, मैंने बोल दिया अगर मेरे को, मेरी फैमिली को, जितने भी रेसलर हैं इनकी फैमिली को, इनको कुछ भी हो रहा है तो उनके जिम्मेदार वही होंगे। So that's Vinesh Fogart really breaking down all those details, saying that this is her truth. This is the truth of so many women today who are, continuing to make the country proud, and they're not going to stop fighting for themselves. They're not going to stop at any cost whatsoever because this is their truth. They have been leveling all of these concerns. They've been raising them time and again, and to no avail because it's fallen on deaf ears. They say that every time they have raised these issues, they've raised these concerns, they have received death threats instead. So that's the claim that's coming in from Vinesh. She's been sitting here for the longest time since early this morning. We've seen how they've been sitting on a protest. They've been leveling all of those allegations against the WFI president, Brij Bhushan, who, by the way, after these allegations were raised, and the biggest one, of course, of sexual harassment and exploitation that was raised by Vinesh Fogart itself. After having made those allegations, she is today saying that she was scared for the longest time to speak the truth, but she's going to have to do it for the future generations. She's going to have to do it for the young athletes who are now determined to make the country proud, and she has to now set an example. We'll also play out the reaction of Brij Bhushan, the WFI president, because he's come out to counter all of these allegations. He's raising questions on why is it that these allegations are coming in after 10 years? Why is it that these many wrestlers could not be seen assembling earlier prior to this, leveling all of those allegations, raising it with senior authorities? That's the counter that's coming from him. But in the meanwhile, let's quickly play out the reaction from DCW Chief Swati Maliwal as well. बहुत दुख हुआ देख के कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे ओलंपियन रेसलर्स को आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। उनका ये आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और कई कोचेज महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। कितनी शर्म की बात है इस देश के लिए कि जिन शेरनियों ने ओलंपिक्स में जाकर हमारा नाम रोशन करा, आज उनको सड़क पे बैठ के रोना पड़ रहा है। बहुत ही गंभीर मामला है और हमने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को और केंद्र सरकार को, क्योंकि इस मामले में तुरंत न्याय होना ही चाहिए। All right, so these are allegations, remember, that have been leveled against the WFI president, who's also a member of parliament of the BJP from Uttar Pradesh. He's come out to say that these are baseless allegations, these are false allegations, and they have now been leveled by these wrestlers, by these athletes, given how they do not approve of certain rules that have been brought in from the federation. Here's his reaction. यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, वो कह रहे थे मोदी जी को बताया बार बार नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। आपको क्या वजह लगती है? आपको क्या वजह लगती है? क्यों लगाए गए हैं? आपको क्या वजह है? आपकी तरफ से क्या वजह है? देखिए अभी So yes, you heard Brij Bhushan there, the man against whom all of these
allegations have been leveled by not just one athlete. We're not just talking about Vinesh Fogart today, viewers. We're talking about several of them. At least 30 of them were seated here since early this morning. Some of them still here saying that we're not going to stop fighting this war against the WFI president. We also, interestingly, tried to speak to Union Minister Anurag Thakur. Here's that sequence. One reaction, sir. Bajrang Punia and all, sir. The Wrestling Federation. Sexual harassment का भी sir उन्होंने allegation लगाया. Anurag sir, will you talk to the athletes? Anurag sir, will you talk to the athletes? Sexual harassment का case, sir. Sexual harassment. We asked the sports minister regarding what exactly he has to say on the serious allegations that have been leveled by the wrestlers, and the allegations of sexual assault have also been leveled by the wrestlers over there. But as of now, when we asked Anurag Thakur this, he did not speak anything. So yes, that's the reaction of the Union Minister, not really taking those questions. But Karishma has been here at Jantar Mantar since this morning, when some of these athletes, some of these wrestlers decided to sit here and raise their voices. They also, Karishma said that they're going to break down details at 4 p.m. and it came as a big shock because these were serious allegations against the top boss, against the top man, who's now come out to conveniently say, no, none of this has happened. It's completely baseless. Why is it that they're raising all of these issues now? Why is it that they did not raise it earlier on? But here, you have the Fogart sisters, you have Sakshi Malik, all of them say it's not just her story. We've all been through the same thing. And what they're also saying is that they are talking because they have face value. They're talking on behalf of all wrestlers that go to national camps that represent India. So clearly this is very, very important that these wrestlers have come out and they're speaking against the WFI. That there was a time when she was thinking of committing suicide and that she was even given death threats, of which she informed the Prime Minister. And she's gone on to say that why she's safe today and alive is because of the assurances that have been given by the Prime Minister. So it is very, very huge statements that are coming in from Vinesh Fogart, and she is categorically saying that she has no reason to lie. And she's quite hopeful. She's quite hopeful that the Union Home Minister, the Prime Minister will listen into their problems, they will give in to their troubles, and they will take action against those who have to be held responsible here. But we have a breaking news reaction coming in. Karishma, I'll just come back to you. A Congress response that's come in, because remember, Brij Bhushan, apart from being the WFI, the Wrestling Federation of India's president, he's also a member of Parliament of the BJP, and in that sense the Congress taking potshots at the BJP, saying that this truly exposes the mentality of the party. Here's that reaction. Then we'll go across to the athletes staging a protest here once again. Interestingly, another development that we're picking up is with regards to how the sports ministry is in a huddle deciding what needs to be done next and what steps can be taken, since these are very, very serious allegations, damning allegations that have been made against a BJP MP and also the WFI president. Karishma, if I could take this across to you once again, the sports ministry certainly cannot let this go, or perhaps wait for this situation to settle down, because here are women athletes with some of their male colleagues who've decided that they're not going to stop fighting. Well, it's absolutely, and one of our colleagues did try to speak to the sports minister, Mr. Anurag Thakur, but he did not answer anything. He was evasive. But what I can confirm is that sports ministry is in a huddle at the moment, and they're deciding what needs to be done, what steps need to be taken. Do they need to do an investigation? Do they need to suspend Mr. Brij Bhushan Sharan pending an inquiry? What needs to be done? The sports ministry is in a huddle at this moment. There has been no official communication, but they have taken note of what has happened today at Jantar Mantar and the allegations that have been made by. से बात करने के मौका दीजिए, अपने फेडरेशन के लोगों से बात करने का मौका दीजिए, खिलाड़ियों से बात करने का मौका दीजिए, अपने ऑफिस के लोगों से बैठ करके बात करने का मौका तो मिले। अच्छा, मौका तो मिलना चाहिए बात करने के लिए कि आते ही इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा देने से समस्याओं का समाधान हो जाए तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मुझको क्या लेना देना है यार। करप्शन का भी आरोप लगा रहे। करप्शन का कोई साबित नहीं कर सकता, कोई पैदा नहीं हुआ करप्शन का। मैं अपना पैसा खर्च करता हूं, अपना। आज तक मैंने टीएडीए नहीं लिया है, आज तक मैंने टीएडीए नहीं लिया है। पहले लोग टीएडीए लेते थे, हम और हमारे साथी अब टीएडीए भी नहीं लेते। करप्शन का आरोप कोई नहीं लगा सकता है। तो आप कह रहे हैं करप्शन का आरोप कोई लगा ही नहीं सकता, करप्शन का आरोप। अच्छा, पहलवान को ये भी आरोप लगा कि आपने किसी पहलवान को पिटाई कर दी, कुछ इस टाइप का आरोप भी आपके ऊपर लगा था। वो मेरे अखाड़े का बच्चा था भाई,
मेरे अखाड़े का बच्चा था, मुझसे झगड़ रहा था, उसका नाम किसी टीम से सेलेक्ट नहीं था। अच्छा। वो नंदनी नगर का बच्चा था, नाम किसी टीम से सेलेक्ट नहीं था। अच्छा। और वो कह रहा था मुझको लड़ाई है, मैं नंदनी नगर का हूँ। अच्छा। और इसको लेकर के मैंने उसको ऐसे कर दिया कि तू नंदनी नगर का है तो तेरे लिए कानून नहीं है, तू जब चाहे लड़ेगा। उसने बाद में ट्वीट भी किया है, माफी भी मांगी है। हाँ हाँ, मैं वो लगा रहा हूँ ईपी। अरे रुक जा भाई, अब लाइव कर रहे हैं ना। ईपी लगा लीजिए। हो गया। हेलो, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। All right, of what I heard, given that there's a lot of chaos and commotion here as well, of what I heard the WFI president, the BJP MP say that if his resignation is going to be a solution to this, if it's going to settle the debate, if it's going to get all of these athletes to move back and is going to make them happy, then he's okay to do so. He's more than happy to do so. He's more than willing to do so. That's the reaction that's coming from him. But remember, these are very serious allegations, though we did try to take in a word from the sports minister, Anurag Thakur. But, you know, nobody quite breaking silence at this point in time. These are very serious allegations. Perhaps they're going to try and get to the bottom of this, conduct an in-depth inquiry, try to understand what really are the merits in the allegations that have been leveled by several of these athletes, of these wrestlers who, remember, have brought so much glory to our country, who made us proud on so many occasions. We're talking about Commonwealth medalists, Asian Game medalists, world champions, Olympic medalists. You know, Brajesh Punia was also here, really leading their camp since early this morning. So remains to be seen how this plays out. But very serious allegations being leveled by some of the wrestlers, top wrestlers of our country. Times now continues to track that very closely. In the meanwhile, heading into a quick break for now.